Hello students, I am Naveela Tariq. Today we will continue with the chapter The Selfish Giant, page number 19, the last paragraph. In this chapter we had learnt about the giant who was so selfish that nature got so angry with him that there was only winter season throughout the year in his garden. Spring refused to enter his garden because of his selfish and brutal nature. Okay, we'll start with the paragraph. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. Now, the giant is looking out of his window and he is wondering that why there is always frost and snow and bitter chilled weather in his garden, why he doesn't experience any spring season there, why he cannot see the sunshine, why he is not able to hear the birds chirping in the trees and sun rays shining on his garden with fruits, flowers and leaves everywhere, why it is not so. स्प्रिंग सीजन को आने में इतना लेट कैसे हो गया, दैट ही इज़ वंडरिंग. But the spring never came nor the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. Now, spring never came in his garden, nor did summer came, and nor did the autumn season came. In the autumn season, usually fruits they get, they have ripe fruits on the trees, and delicious fruits are there were there in every garden, but only in his garden there was winter season. Why it is so? Because he was too selfish, she said. So it was always winter there. Now over here the autumn season is saying that this giant is very selfish, and that's why she never came in his garden. And the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. So who all were present in his garden? There was always north wind, there was hail, there was frost and there was snow, which was dancing around in his garden and kept dancing throughout the year. One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. Then the hail stopped dancing over his head and north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of the bed and looked out. Now, even the giant was so fed up of the winter climate, the winter season in his garden, that he was eagerly waiting for spring season. मतलब जाइंट अपने गार्डन में सर्दियों का मौसम देख देख के इतना परेशान था कि वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था विंटर सीज़न के. वन डे जब वो सुबह अपने बेड पे लेटा था तो उसे एक बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनाई दिया. उसे लगा कि किंग मतलब राजा के जो म्यूजिशियंस हैं वो वहाँ से निकल रहे होंगे. बट व्हेन ही हर्ड इट केयरफुली, उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके विंडो के बाहर एक लिनेट. नाउ लिनेट इज़ अ स्मॉल बर्ड विच सिंग्स ब्यूटिफुल सॉन्ग. मतलब एक छोटी सी बर्ड होती है लिनेट, नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो ब्राउन कलर की होती है, और जब वो चर्प करती है, जब वो अपनी आवाज़ निकालती है तो बहुत म्यूज़िकल सॉन्ग जैसी उसकी आवाज़ लगती है. इट इज़ अ म्यूज़िकल बर्ड which was singing outside his garden, outside his window. Now the giant got very happy because उसने बहुत टाइम से कोई बर्ड अपने गार्डन में बर्ड को बोलते नहीं सुना था. सो ही अंडरस्टूड दैट स्प्रिंग हैज़ कम इन हिज गार्डन. तो उसने बेड से उतरा और उसने बाहर देखा. नाउ वील कम टू द सेकेंड कॉम्प्रहेंशन चेक. ही सॉ Okay. To celebrate return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. The giant was delighted to see his friends back, especially the little boy whom he loved dearly. The little boy soon disappeared only to return much later. Now,
These 3 points are the aspects, the components of the entire comprehension check. We'll start. He saw the most wonderful sight. Through the little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child, and the trees were so glad to have the children back that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. Now, जब उसने बेड से उतर के विंडो के बाहर देखा, उसको ये उम्मीद थी कि स्प्रिंग सीज़न उसके गार्डन में आ गया है. एंड दैट टाइम ही सॉ अ वंडरफुल साइट, मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा उसने देखा. ही सॉ दैट चिल्ड्रन हैड एक्चुअली कम इनसाइड द गार्डन थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल. वॉल में एक छोटा सा होल था जिससे जितने भी बच्चे थे वो गार्डन के अंदर आ गए थे. And they were all sitting in the branches of the trees, as it is shown in the picture over here. Trees के branches के ऊपर बहुत से बच्चे आके उसके ट्रीज़ पे बैठ गए, ट्रीज़ के नीचे बैठे थे, खेल रहे थे, कुछ ब्रांचेस पे बैठे थे, और हर एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा बैठा था. एंड ट्रीज़ वर लुकिंग सो हैप्पी, मतलब पेड़ों को देख के ऐसा लग रहा था कि पेड़ इतने ज़्यादा खुश हैं कि बच्चे वापस आ गए. एंड दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग दैट एट वंस द फ्रॉस्ट डिसअपियर्ड, मतलब वो बर्फ़ और जो फ्रॉस्ट जमी थी पेड़ों पे वो एकदम से गायब हो गई. एंड द ट्रीज़ कवर्ड विद देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, और ट्रीज़ पेड़ फूलों से और पत्तों से भर गया. एंड ऐसा लग रहा था कि पेड़ अपने आर्म्स, मतलब अपनी जो ब्रांचेस हैं उनको हिला रहे हों, जैसे अपन अपने हाथ हिलाते हैं when we are happy. Similarly, the trees were waving their arms gently above the children's head. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner of the garden it was still winter. Now, the birds were flying everywhere and they were twittering. Twittering means the birds were chirping in a very beautiful चर्पिंग ब्यूटिफुली, मीन्स उनके जो जब बर्ड्स बोल रही थी मुँह से तो ऐसा लग रहा था जैसे गाना गा रही हूँ. विथ डिलाइट, विथ हैप्पीनेस. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फूल घास में से उगना नहीं चाहते थे पहले, जैसा कि मेंशन था इस चैप्टर में शुरुआत में, दैट फ्लावर्स दे रिफ्यूज टू रेज अप थ्रू द ग्रास, अब वो घासों से उग रहे थे. एंड दे वर लाइक स्माइलिंग अवे. इट वॉज अ लवली सीन. बट ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर. लेकिन गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी सर्दियाँ थीं. इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. "Climb up, little boy," said the tree, and bent its branches down as low as it could. But the boy was too tiny. Now, as you can see in this picture, there is a little boy who's standing in one corner of the garden, and he is unable to climb up the tree. And as you can see, students, this tree is covered with frost, मतलब इस tree पे अभी भी बर्फ़ जमी है, एंड एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रीज़, और बाकी के जितने भी पेड़ हैं दे आर कवर्ड विथ लीव्स एंड फ्लावर्स एंड बर्ड्स आर चर्पिंग अराउंड एवरीवेयर. ओनली दिस in this corner you can find this tree which doesn't have any leaf and any flower. It is still covered with snow, and you can see the haziness, मतलब धुंधला धुंधला दिख रहा है जो यहाँ पे पेड़ के पास. This is the north wind and the hailstorm that is blowing around the tree. So the giant sees के एक गार्डन के कोने में अभी भी एक पेड़ है जिस पे अभी भी बर्फ़ जमी है, एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल स्टॉर्म इज स्टिल ब्लोइंग अराउंड द ट्री. एंड देयर इज़ अ स्मॉल बॉय हु इज़ सो टाइनी, मतलब वो इतना शॉर्ट है हाइट में कि वो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है. एंड ही इज़ क्राइंग बिटरली, और वो बहुत पिटीफुली तरीके से, बहुत बिटर तरीके से, बहुत बुरी तरह से रो रहा है. And the giant's heart melted as he looked out. "How selfish I have been," he said. "Now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever." He was really very sorry for what he had done. Now,
ये सीन देख के, दैट दिस चाइल्ड इज क्राइंग बिटरली एंड दिस ट्री स्टिल हैज़ फ्रॉस्ट ओवर इट, द जायंट्स हार्ट मेल्टेड, मतलब जायंट का दिल पिघल गया ये सीन देख के, और उसको ये रियलाइज़ हुआ दैट ही वॉज वेरी सेल्फिश एंड उसकी ही गलती की वजह से स्प्रिंग उसके गार्डन में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने बच्चों को आने से मना कर दिया था, इसलिए नेचर, प्रकृति भी उससे नाराज़ थी, एंड स्प्रिंग एंड समर एंड ऑटम सीजन हैड रिफ्यूज टू कम इन हिज गार्डन। नाउ क्योंकि सब बच्चे वापस आ गए हैं, इसलिए स्प्रिंग सीजन भी वापस आ गया है। एंड ही अंडरस्टूड कि उस कॉर्नर, उस गार्डन के उस कॉर्नर में अभी भी सर्दी इसलिए है बिकॉज दैट पुअर चाइल्ड इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज ही वॉन्ट्स टू क्लाइंब अप द ट्री एंड ही इज़ टू शॉर्ट एंड ही कैन नॉट क्लाइंब, and because of his unhappiness there is still frost and winter season in that garden. He felt sorry for whatever he had done and now he wanted to you may say correct himself, अपने आप को वो correct करना चाहता था, सही इंसान बनाना चाहता था. So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went into the garden, but when the children saw him they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him back into the tree. Now, उसने सोचा कि वो अपनी गलती सुधारेगा, वो नीचे गया और उसने धीरे से गार्डन का मेन गेट खोल दिया. And then he went inside the garden. But when the children saw the giant, they were so frightened कि वो लोग वहाँ से भाग गए. और जैसे ही वो बच्चे वहाँ से गए, देयर वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन. जैसे ही बच्चे गए, स्प्रिंग सीजन चला गया और विंटर सीजन फिर से आ गया गार्डन में. बट ओनली दैट लिटिल बॉय डिड नॉट रन. लेकिन कोने में जो वो बच्चा खड़ा था वो जायंट को देख के नहीं भागा. वाई? बिकॉज दिस बॉयज़ आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स. मतलब इस बच्चे को जायंट दिखाई नहीं दिया. क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि उसके आँखों में आंसू थे. हिज आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, सो ही डिड नॉट रियलाइज दैट द जायंट वॉज कमिंग इन द गार्डन. जायंट ने उसको गोद में लिया बहुत जेंटली, मीन्स इन अ वेरी केयरफुली लविंग मैनर, और उस पेड़ पे बिठा दिया. And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his 2 arms and flung them around the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back with them, and came the spring. Now, जैसे ही giant ने उस बच्चे को उठा के पेड़ पे बिठाया, एकदम से at once the tree broke into blossom, मतलब एकदम से उस पेड़ों में पत्ते निकल आए और फूल खिलने लगे. The birds also started singing around the tree and the proper spring season came in that garden. The child became so happy that he stretched his hands and he kissed the giant, and around the giant's neck he held his hands. मतलब उसने, जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, वो बच्चा इतना खुश हो गया कि उसने जायंट को किस किया और उसके गले में हाथ डाल के उससे लिपट गया. जब बाकी के बच्चों ने देखा दैट द जायंट इज़ नॉट विकेड, विकेड मीन्स जायंट अब बुरा नहीं है. जैसे वो बुरा था, एक्चुअली ही वॉज अ बैड पर्सन, नाउ ही इज़ नॉट एट ऑल अ बैड पर्सन, अ क्रूल पर्सन. तो बच्चे भी वापस आए और गार्डन में खेलने लगे. एंड अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन केम द स्प्रिंग सीजन. Okay students, we will stop our explanation over here. I will give the explanation of the remaining chapter in the next class. Thank you.